ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन नंबर 3 है। स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक देख रहे हैं, जिसमें से काफ़ी टॉपिक्स हम देख चुके हैं। पहले सेशन में हमने इनिशियली दो टॉपिक जो हैं उनको डिस्कस किया। दूसरे टॉपिक में पाथ और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया। इस टॉपिक में हमने एपीआई टेस्टिंग और डेटा फ्लो टेस्टिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले एपीआई टेस्टिंग की बात करेंगे। एपीआई टेस्टिंग में एक चीज़ पहले तो ये है कि ये प्राइमरीली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसमें जो है वो चूँकि जो एपीआई है ये बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स और सिस्टम्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है, और खास तौर पे क्लाइंट सर्वर जो अ, के लिए इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल बेस्ड है। और रिमोट लोकेशन पे जो है वो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्राइमरीली, और लोकल सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए। एपीआई टेस्टिंग जो है वो, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एपीआई की क्या है। प्राइमरीली इसको टेस्ट करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एपीआई फेलियर हो जाते हैं, और वो टेस्टिंग करने के लिए टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। टिपिकल एपीआई के यूजेजेस हैं कि organization is likely to use private partner or public APIs. Very often, business organization will use APIs to tie together the disparate or isolated systems after merging with another company. This can reduce the amount of work needed rather than trying to merge all of the systems together physically or through software. When an API fails, an organization can be exposed to high level of risks. बहुत सारे रिस्क्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और आउटलाइन किए हैं। कुछ यहाँ टिपिकल एग्जांपल के तौर पे दिए हैं: सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। Risks to both the organization providing an API and the organization which is consuming it. There are some barriers in API testing, क्योंकि ये तो प्राइमरीली कम्युनिकेशन और फैसिलिटेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। Exposes experts note that the amount of time and resources needed to adequately test APIs is often the same as needed to analyze and develop them. So testing encompasses a bigger, broader spectrum. This can cause problems with management who are used to much smaller test after efforts relative to the development efforts. So API testing is a black box testing and also primarily an integration testing, because we are talking about the communication between modules and softwares and systems. सो इससे पहले जितनी भी अपने कोड लेवल की, स्ट्रक्चर लेवल की बात की थी, वो ज़्यादातर यूनिट टेस्टिंग के रेफरेंस से थी। लेकिन अब ये पार्ट जो है ये उससे एक। सो देयर इज a नीड ऑफ ऑटोमेशन टूल्स फॉर एपीआई टेस्टिंग, बिकॉज एपीआई टेस्टिंग जो है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स किताब में अच्छे अंदाज में दी गई हैं। The automation tools that are needed for API testing must have intuitive interfaces, automating as much of the test development as possible, as well as the execution of the tests. The protocols used to define the API tend to be well developed and documented, if not fully matured. अक्सर मकसद ट्रांजेक्शन जो है उसका सक्सेसफुल कमिट हो जाना, और उसका जो है वो प्राइमरली जो भी रिमोट प्रोसेस को डेटा या इंस्ट्रक्शन भेजी जा रही है उसको प्रॉपरली जो है वो यूज़ करना, और उसको प्रॉपरली जो है वो
system में incorporate करना. That allows many of the tools in the market today to deliver facilities for creating multiple tests to cover the protocols. This helps technical test analysis to create more and better tests in less times because the automation tools are available. So manual testing is very tedious, and if there are known scenarios जो कि commonly used scenarios हैं, they can. इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक इस सेशन का है वो डेटा फ्लो टेस्टिंग के हवाले से है, क्योंकि अब तक हमने कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की तो बात की है लास्ट टू जो हमारे सेशन हैं उनमें, लेकिन डेटा फ्लो जो टेस्टिंग है या वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में जो टेस्टिंग है उसकी एग्जांपल एज सच नहीं है. So data flow testing is a white box design techniques in which test cases are designed to execute the definitions and use pair of the variables. Okay, many data flow issues are related to programming languages being used mostly क्योंकि प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करना वेरिएबल और उसको यूज करना और कास्ट करना और उसका स्कोप चेंज करना या उसका जो फॉर्म उसका चेंज करके टाइप चेंज करके उसको यूज करना. often there are often errors and bugs in this space. Good technical test analysis should be able to investigate why data is used, the ways the data is used. No matter how good programmers, even great programmers generate bugs. So it is possible. So some data flow errors are listed here. There are many, but we have to go through this list. Assigning an incorrect or invalid value to a variable. These kind of errors include data type conversion issues, where the compiler allows a conversion, but there are side effects that are undesirable. आमतौर पे ये बहुत सारे सिस्टम्स में, खासतौर पे जब हम एम्बेडेड सिस्टम्स में काम करते हैं वो इनपुट को एज ए टेक्स्ट ट्रीट करते हैं, बाद में हमें उसको जो है वो एज ए वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है टाइप में ताकि हम उसको यूज़ कर सकें. इन सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं इनकरेक्ट इनपुट रिजल्ट्स इन द असाइनमेंट ऑफ इनवैलिड वैल्यूज, failure to define the variable before using its value elsewhere, incorrect path taken due to the incorrect or unexpected value used in a control predicate, trying to use a variable after it is destroyed or out of scope. आपने एक वेरिएबल या फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल उसको खत्म फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद उसका स्कोप खत्म हो गया, हम उसको यूज करने की कोशिश, सेटिंग ए वेरिएबल एंड देन रीडिफाइनिंग इट बिफोर इट इज यूज्ड. Side effect of changing a value when the scope is not fully understood. For example, a global or static variable change may cause ripple to other programs, process and modules in the system, and treating an argument variable passing by value as it if were passed in by the reference or address vice versa. So, yeah, terminology and the notion which is used in this slide number. Now we take an example in which a cell phone plan is primarily prepared. In the statement of the plan is if the customer uses up to 100 minutes, then there is a flat fare of $40 for the plan. For all minutes used from 101 minute to 200 minutes, there is an added fee of zero point 0.5 per minute. Any minute after that used are billed at zero point 0.1 per minute. Finally, if the bill is over $100, a 10% discount on the entire bill is given. So variable is defined in line number 1 and variable is used at line number 3. Usage is greater than 0. Similar line by line,
appeared in the next units. And this may be a reading assignment for you कि आप इससे go through हो इससे थोड़ा हो जाए. So we are moving towards the data flow testing, data flow patterns. So once the data flow patterns are defined, testing testing become a relatively simple case of selecting data such that the each-defined pair is covered. Of course, this is not guaranteed that all data-related bugs will be uncovered. For example, we primarily outline the life cycle or the control flow diagram of the variable bill. Okay, so there is a start and there is an end. Initially, bill is set to zero, then a condition in which usage is checked, then bill is made 40, and then usage is again checked. If it is greater than 100 and less than or equal to 200, and in this case, if the usage is up to 200, then the bill again calculated by adding the extra value to the 40 about the rest of the hours. जैसे अगर 50 hours 150 hours consume हुए हैं तो for 50 hours 0.5 is added and the bill is then. And if the usage exceeds 200, then there is another calculation is made. And also if bill exceeds 100, then a discount is calculated, and that discount is also primarily after calculation of the discount, it is goes to the end. There is also एक एक बग यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है और वो ये हो रहा है कि अगर यूजेज जो है वो 100 और 200 के दरमियान है तो उसमें भी जो है वो एक डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो होनी चाहिए बट इट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन के जो डिस्क्रिप्शन है वो प्राइमरीली क्या है आई हैव डाउट ऑन दिस कंट्रोल फ्लो डायग्राम कि ये एग्जैक्ट नहीं बनी हुई बट एनी हाउ it just shows how the variable changes its value and defined and used. Now we are primarily considered about one variable that is the bill variable, and in this diagram only the bill variable is primarily brought forward. Bill is variable is defined and then it is again defined in number 3 and then in number 6 it is used and then again defined, then it is used and then it is used and defined. And similarly, I don't इसमें भी एक जो है ना arrow का कोई issue जरूर है. But anyhow, we now define use pair for the variable bill. ये इस तरीके से define किए गए हैं. First is the normal case in which initially the variable bill is defined. One place where we have a first definition. Then one potential bug where we have double definition in the flow, line number 1, 2, 3, in which there is a double definition, which is a potential bug. And then we have 7 separate BU pairs where we define and then use the pair, which is a normal case. Similarly, use and define, there are 3 separate use define pairs where we use and then redefine the pair. So, and similarly, 2 separate U pairs where we use and then reuse the pair. Then we have one UK pair where we use and then kill the bill. And finally,
one place where we kill the pig. Most of the cases look pretty much normal, but there is a double definition which should be checked for the potential bug on line number 1, 2, and 7. Similarly, a graph is created for the variable usage in which the variable usage is outlined. Similarly, we can make a table like bill के जो है वो इसमें जो पेयर हैं डिफाइंड यूज पेयर्स हैं वो क्या है initially the there is a definition of usage and then it is defined and used then used and used killed this is a all for all of the cases say normal usage. Yeah. Does not outline any potential bug with the variable this is also the explanation of the which is given. Now at the end we have some reading assignment from chapter 2 and 3 from the advanced software testing book and similarly a recent a blog in which the static code analysis approaches and the tools were outlined and also they were primarily combined with the predictive test selection. This is an interesting short article for the reading assignment. इसके साथ ये सेशन खत्म होता है थैंक यू वेरी मच